കോൺഗ്രസിലെ തന്റെ റോൾ എന്തെന്ന് പുതിയ അധ്യക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. കോൺഗ്രസിലെ പരമോന്നത അധികാരി പ്രസിഡന്റാണ്. തന്റെ പദവി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കും. ഖാർഗെയും തരൂരും അനുഭവ പരിജ്ഞാനം ഉള്ളവരാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണം. नमस्कार मित्रों, मैं तो आया हूं, आपको पता है आज हमारे इससे लाउड तो नहीं होगा मुझसे सॉरी, आप लोग और नज़दीक आना चाहते हैं तो शायद बेहतर होगा. हाँ, इनके माइक तो पिकअप करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा चिल्लाना. पानी भी लेके पानी. हाँ, पानी. माफ करो, क्योंकि वैसे भी 18 दिन से चिल्ला रहा हूं तो मैं गला तो गया. एक बार चिल्लाइए सर, थोड़ा आज लगेगा कि ഇദ്ദേഹം വെറും 10 ജേഴ്സി പശുവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ 18 ലക്ഷം രൂപയോളം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കണോ? എങ്കിൽ ഈ ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. एक आखिरी बार चिल्लाएंगे. अच्छी बात है. देखिए, आपको पता है कि आज कांग्रेस पार्टी के करीब 900 से ज़्यादा अंग हमारे डेलीगेट्स, हमारे पीसीसी डेलीगेट्स करीब 9,000 माफ़ कीजिए, आज निर्णय लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारा नया अध्यक्ष होगा. मैं खबर सुन के उनके घर गए और उनको मेरी बधाई सुना दी. वो बहुत मेरे वरिष्ठ नेता है. मैं उनके साथ काम भी किया हूँ लोकसभा में, जैसे मैं आप सबको पहले भी बताया था. हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है. और मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुझे समर्थन दिए, जिनमें से 1000 से ज़्यादा मतदान देने वाले हमारे डेलीगेट्स भी थे, और बहुत सारे जो शायद वोट देने का हक नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए काम करने वाले मुझे हर प्रदेश में आके समर्थन दिए, मेरे साथ निकले और हर जगह में, जैसे आप आज भी देखते हैं, मेरे साथ रुक के मुझे जिस किस्म के मॉरल सपोर्ट दिए, मैं इसके लिए आभारी हूँ. मेरे ख्याल में हमारे कार्यकर्ता हैं हमारे पार्टी का असली गुरूर, और मैं कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के काम से ही पार्टी आगे बढ़ेगी. और मैं खुश हूँ कि उनको इस विषय से इस चुनाव से उनको भी एक मौका मिला हमारे पार्टी के भविष्य के बारे में सोचने के लिए, और उनके ही पसीने से, उनके ही काम से हमारे पार्टी का भविष्य बनने में एक बहुत बड़ा भूमिका लेना. मैं चाहता हूं कि पार्टी उनकी भी आवाज़ सुने. मैं चाहता हूं कि खड़गे साहब का विजय हम सब मान ले कि कांग्रेस पार्टी की जीत है. मैंने शुरुआत से ही कहा था, ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं. मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता. मैं सिर्फ चाहता हूं कि पार्टी मजबूत बने, क्योंकि भारतीय मजबूती के लिए एक कांग्रेस मजबूत होना बड़ी ज़रूरी है. तो इसी स्पिरिट में और इसी उद्देश्य से मैं लड़ा, और जो भी इस लड़ाई में भाग लिए उनको मेरी बधाई और मेरी ऑल माय ग्रैटिट्यूड मैं बताना चाहता हूँ. मैं उससे अभी रुकूंगा, क्योंकि अगर आप लोग को प्रश्न होंगे तो शायद उसके लिए जवाब दे दूंगा. लेकिन मेरे मन में ये बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए, और यहाँ से हम आगे बढ़ के कांग्रेस को हमारे देश के आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी जाग गए हैं. सब लोग तैयार हैं बीजेपी के चुनौती को निपटने के लिए, और मैं भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी पार्टी आप लोगों को हमारी कामयाबी दिखा सकेंगे. देश का गुरूर शशि थरूर, देश का कोहिनूर शशि थरूर. Mr. Tharoor, I have a question. Yeah.
Mr. Tharoor, you got almost 1,072 votes. So many are saying, the political observers are saying that these votes reflects that there is a feeling of dissent within the Congress cadre, because Mr. Kharge was seen as a Gandhi family candidate and you were not seen as a Gandhi family candidate. So many are saying that Congress also, 1,000 people in the Congress, among the Congress delegates, want change, and this is a vote for dissent. Like how? There's a difference between the two. I didn't pitch myself as the candidate of dissent. I pitched myself as a candidate of change. And change not in the ideology of the party or in the direction of the party, but rather in the manner in which we do our regular work. And I did feel that there was a need for opening up access to karyakartas in the party, creating more opportunities for discussion forums, implementing not only the declarations of the Udaipur Chintan Shivir, but further some of the additional ideas that I had published in the manifesto, which came to me largely from our own party workers who wanted to see these changes. And therefore, for me, I would stress that it is not so much about dissent, but how we can make a good party better. I believe we have the experienced leaders, the strong record in governance, and the convictions and values that are right for the country. But what I felt there was a problem with was that there was a sense of disconnect on the part of many of our workers, and that we needed to overcome that by giving them a greater sense of involvement. I hope the election itself has contributed to giving them some sense of involvement in the party. I believe that is the case. But I think beyond this, there's much more that needs to be done, and I hope Mr. Kharge, once he has had time to assume his role fully, will look seriously at how all party workers can contribute to effective governance in the party so that we can mount an effective challenge to the BJP in the elections ahead. Yeah. Mr. Tharoor, while you were campaigning as well, there were times when you raised that, sometimes it seemed like that Mr. Kharge was being felicitated by the PCC chiefs. Today also there was a letter which came out. Mr. Soos had also spoken about that, where you said that there were some discrepancies or some violations that your team had raised. Did it always feel to you that this was a one-sided, some are calling it a rigged election against you, so you still fought the fight because you had to? Or are you absolutely satisfied with the way this entire election has been conducted? Look, first of all, I think the leak of that letter was unfortunate, and I said so immediately. It's certainly not something we would have done, and we are getting some very educated guesses as to where it came from, but that's neither here nor there right now. All I wanted to say is that throughout the election, Salman, as the campaign manager, was receiving information from the field, from our party workers, and wherever there were anything that he felt needed to be brought to the attention of the election authority, it was so done. This is not the first letter that was sent. It was the last letter, but it was not the first. And I will say that what Salman was doing was his duty in alerting the election authority to any violations that have been reported to us. They would then have to inquire and judge whether any action should be taken. I'm not aware that any action has resulted on any of these things, but the point is everybody has to play their role in this particular situation, that's all. We are conscious that the party has held no election for 22 years. And I don't think we can either say we are absolutely satisfied or that we have any reason to mistrust. I think the fact is that in an election of this nature, after such a long time, there are bound to be glitches, there are bound to be slip-ups, and there were. But the fact is that for us, we never doubted the good faith of the election authority or of the party leadership in wanting to have a free and fair opportunity for both candidates to contest. You're right, the leadership by and large stayed with Mr. Kharge. Again, that is not necessarily surprising. If you have a choice between change and continuity, and you are part of the continuity by your own rule, why would you want to change? I mean, I must say I admire those who did come out nonetheless and support me, but I would say that that's an inevitable thing. Conversely, a lot of those who signed my nomination forms, a lot of those who accompanied me, a lot of those who sat alongside me in press conferences at PCCs and so on, were also people of some heft in the party, either by virtue of having positions themselves. We've had MPs and fairly senior MPs and former MPs alongside me,
But we've also had a lot of party workers who devote hours of their days, day in and day out, in many cases for very many years. Some of them are standing here, they've devoted decades to the party without any such recognition. But they still feel that idealism, that desire to see the party succeed. And for me, sticking to the election was not just stubbornness or anything like that. It was also an acknowledgement of what I owed to all those who have taken so much of effort to promote my views and this desire for change in the party. So I have no regrets about any of this. ശശി തരൂർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. 1000-ലധികം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചത് നേട്ടമാണ്. പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തുടരും. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച നേട്ടം കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അതിനായി പോരാടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് തന്റെ കരുത്തെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു.